Hello traders, good morning. So मैं यहाँ पर तीन स्टॉक के एनालिसिस करूंगा बेस्ड ऑन द फंडामेंटल, based on the current technical pattern and based on the WT Gann level as well as the price and time square. तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले स्टॉक जो मैंने यहाँ पर पिक किए हैं दैट इज द अनुपम रसायन इंडिया लिमिटेड। तो बेसिकली अगर आप इस स्टॉक के फंडामेंटल को देखने की कोशिश करेंगे, सो द कंपनी डील विद द स्पेशलिटी केमिकल्स। वहाँ से उनके जो 92% जो रेवेन्यूज आते हैं दैट इज कमिंग फ्रॉम दैट। अगर आप स्टॉक के कंपेयर करेंगे इसके ही आसपास के जितने भी स्टॉक है उनके साथ, तो वहाँ पर पिडलाइट आते हैं, एसआरएफ आते हैं, गुजरात आते हैं, सोलर आते हैं, दीपक नाइट्रेट, द आरती इंडस्ट्रीज एंड द अनुपम रसायन इटसेल्फ। मार्केट कैप के बारे में अगर बात करें तो सारे के सारे जितने भी स्टॉक्स मैंने यहाँ पर देखे हैं इन सबसे सबसे छोटा ये अनुपम रसायन का मार्केट कैप है। ठीक है। ओवरऑल अगर आप देखें तो द स्टॉक इज करेंटली डूइंग गुड, बट मैंने क्यों इस स्टॉक को पिक किए हैं, आई एम कमिंग टू दैट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये स्टॉक को पिक करने के मेरे जो फर्स्ट रीजन है दैट इज द रूल ऑफ 50%। मतलब अगर आप देखें तो 50% के जो रूल है मार्केट के, वो रूल के हिसाब से मैंने इस स्टॉक को जो फर्स्ट मेरे स्कैनिंग में आया दैट इज बेस्ड ऑन द 50%। अगर आप देखिए स्टॉक अपने 1107 के हाई से लेकर जो लो बनाए 547, तो करेंटली वो स्टॉक अपने जो 50% के लेवल है अपने 827 उसके बहुत करीब है। और एक बार मार्केट ने वही 50% जो लेवल है 827, तो उस लेवल से मार्केट ने नीचे की तरफ बाउंस करने के बाद अभी एक पुल बैक दे रहा है ऑन द अपवर्ड साइड। तो आपको एक बात समझना होगा यहाँ पर जो 50% के रूल किस तरीके से अप्लाई होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो मैंने रेंज ड्रॉ किए हैं फ्रॉम द 2022 रेंज, ये 2022 के ही कंप्लीट रेंज है। तो मार्केट गिरने के साथ साथ ये स्टॉक प्राइस भी गिरा एंड गिरकर 0.5 तक गए, नीचे की तरफ आए एंड नाउ इट इज ट्राइंग टू फॉर्म इन पैटर्न। अब बात करते हैं कि क्या हमें स्टॉक पे इन्वेस्ट करना चाहिए या फिर ट्रेड करना चाहिए। तो आई वुड ऑलवेज लव टू से वन थिंग, इन्वेस्टिंग मटेरियल स्टॉक व्हिचएवर इज बेस्ड ऑन द इन्वेस्टिंग मटेरियल, वो स्टॉक अलग होते हैं। वो स्टॉक के जो कैटेगरी है, वो स्टॉक के कंपनी के जो मैनेजमेंट है वो डिफरेंट होते हैं कंप्लीटली। एंड दिस इज वन ऑफ द काइंड ऑफ स्टॉक जहां पर यू हैव टू पिक either book profit or book loss and exit from the stock. This is a kind of opportunity finding stock. ठीक है। ये जो अनुपम रसायन का मैंने स्टॉक लिए हैं ये एक अपॉर्चुनिटी बेस्ड है। यहाँ पर अगर आपको इस सेम टाइम पर अगर आपको इसी कैटेगरी में आपको अपॉर्चुनिटी फाइंडिंग ना ढूंढकर आपको अगर इन्वेस्ट पर्पस जाना है तो यू नो विच स्टॉक यू नीड टू पिक। आई होप यू ऑलरेडी नो दैट इज नथिंग बट द पिडिलाइट। Pidilite is one of the stock, I mean, you know the material, you know the business, the Fevicol. In this period of 20-30 years, almost, अगर आप देखें तो the companies, the wood companies came and go, but the the company who joined the wood, it still remained. So basically, Pidilite Industries is one of the stock in which you can invest and forget. It is very much better than any kind of other investment return which you can get from the market, like the agents who sold it to you, definitely. So basically, this is the one of the thing. But अभी मैं बात कर रहा हूँ कि अनुपम रसायन के बारे में। मैं यहाँ पर पिडिलाइट की बात अभी नहीं कर रहा। तो ये एक स्टॉक है, दिस इज वन काइंड ऑफ स्टॉक। आप अगर मान लो पिक किए स्टॉक को 716 से, अपने यहाँ पर 10% का प्रॉफिट दिखे, आप निकल गए। दिस इज वन काइंड ऑफ स्टॉक कैश बेस्ड।
तो बहुत सारे लोगों को ये लगता है कि अगर आपको कभी भी ऐसा लगे कि मैं अगर कैश बेस्ड स्टॉक पे ट्रेड करूंगा फिर भी आई वुड लाइक टू गो विद द ब्लू चिप, यू आर फ्री टू थिंक दैट, यू आर फ्री टू डू दैट, देयर इज नो पॉइंट ऑफ आर्गुमेंट देयर। मैं जस्ट सिखा रहा हूं आपको, इट डजंट मीन कि आपको करना ही है, करना नहीं करना इट इज ऑल अप टू यू, बट मैं क्यों सिखा रहा हूं दैट आई विल लेट यू नो एट द एंड ऑफ द वीडियो। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल अनुपम रसायन की करंट जो पैटर्न है उसके बारे में देखते हैं। इफ यू सी दिस स्टॉक क्रिएटेड द लो एट दिस पॉइंट, लो इन द सेंस द स्विंग लो बना मार्केट में यहां पर, उसके पहले मार्केट में स्विंग हाई बना था यहां पर। करंट मार्केट सिनेरियो पे इफ यू वांट टू सी इट फ्रॉम हियर टू हियर, यहां से लेकर यहां तक, अगर आप ये वाले पार्ट को देखेंगे, वॉट एवर यू आर गेनिंग, मार्केट ने जब आपने स्विंग हाई से स्विंग लो बनाए, मार्केट ने एग्जैक्ट 0.786 तक गए, फ्रॉम दिस जोन इट इज कमिंग टू दैट एंड। तो अभी अगर कोई भी टाइम, कोई भी पर्टिकुलर टाइम मार्केट इस लो को ब्रेक करे, द स्टॉक विल बी नॉट इन योर रडार फॉर द शॉर्ट टर्म पिक। ठीक है, दूसरे रीजन जो है मेरे पास दैट इज दिस, you can see the 22nd to 2022 the low made at 741, so this is one of the big accumulation zone in this market whichever is present। तो ये accumulation zone को मार्केट जब भी तोड़ेगा either on the upward side or on the downward side, you can get to see a big move on this stock। definitely the stock is for the trading, तो आप कैश पे ही इसको देख सकते हो। तो अभी अगर मैं इस लेवल की बात करूं तो वॉट एवर द लेवल इज, दिस इज द लेवल 741, तो मार्केट अभी जस्ट उसी लेवल पर खड़े हैं। तो दैट इज व्हाई अगेन द सेकंड रीजन आई फाउंड दिस स्टॉक। नाउ कम टू द थर्ड रीजन ऑफ दिस करंट मार्केट, कि जब मार्केट ने यहां पर लो बनाए थे, तो दैट इज व्हाई इज दिस पॉइंट जहां पर मार्केट ने स्विंग हाई बनाए थे, तो फ्रॉम दिस स्विंग हाई टू दैट स्विंग हाई इफ आई ड्रॉ द मार्केट, currently market is again at the level of 50%, 744। now again मैं बोल रहा हूं कि ये स्टॉक ब्लाइंडली पिक के लिए नहीं है। ओके, दिस स्टॉक इज नॉट फॉर इन्वेस्टमेंट। किसी भी कारणवश अगर यहाँ पर टेक्निकली सेल आपको दिख जाए, यू हैव टू सेल इट ब्लाइंडली, यू हैव टू सेल इट विदाउट थिंकिंग टू मच, यू नीड टू एग्जिट फ्रॉम द स्टॉक ऑलवेज। नाउ फ्रॉम दिस रेंज अगर आप देखें, मैंने यहाँ पर एक्युमुलेशन जोन की बात की, एट दिस रेंज मार्केट क्रिएटेड द डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न, राइट, मार्केट ने यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न को क्रिएट किया। So from this distribution pattern, the market is currently hit the distribution pattern once at this particular level on the 28/10/2020, और वो डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न से अगर मैं accumulation और डिस्ट्रीब्यूशन के फॉर्मूला की बात करूं तो यूजुअली क्या होते हैं, फ्रॉम दिस accumulation zone to that distribution zone, market always shuffle in between this zone। तो अगर मुझे इस accumulation और डिस्ट्रीब्यूशन के बीच में कभी भी एक इनसाइड बार पैटर्न और वन काइंड ऑफ दोजी पैटर्न और वन काइंड ऑफ engulfing पैटर्न दिख जाए and market break the upward side, in that case I will either get to take the profit of around from this to that range, which is 14% profit मुझे मिलेगा अगर इस रेंज पर आते हैं मार्केट, और एल्स अगर इसी रेंज से मार्केट ऊपर की तरफ जाने की कोशिश करता है, I will get the profit of 9%, whichever is lower I'm taking the lower profit, or in the higher case scenario it can go up to 17%। ठीक है,
Now let's come to the price and time squaring part. Let me just pause the video. ओके, तो प्राइस एंड टाइम स्क्वायर के अकॉर्डिंग अगर मैंने देखूं लेवल को, तो मैंने यहाँ पर ज़्यादा बैक टेस्ट इसको नहीं किए हैं. आई विल डू सम मोर बैक टेस्ट विद द अदर फ्यू स्टॉक जहाँ पर इच एंड एवरी ट्रेडर कैन पार्टिसिपेट. जैसे कि मैंने कहा, दिस काइंड ऑफ स्टॉक इज फॉर डिफरेंट काइंड ऑफ पर्पस. तो आई मेंशन्ड दिस वन, एंड मैंने जो लेवल अभी लिए हैं दैट इज द 743 लेवल. ओके, तो 743 के जो लेवल है, दिस इज फ्रॉम द डिग्री, द 0 डिग्री लेवल, मतलब शुरुआती के ट्रेंड. दिस इज कॉल्ड द फर्स्ट ट्रेड. तो फर्स्ट ट्रेड अगर मैं लूँ तो 743, and from the zero, this is the 45 degree angle, it is going, it can go up to 757. तो हम इसी दोनों लेवल से खेलेंगे अकॉर्डिंग टू करंट मार्केट प्राइस. तो लेट्स मार्क 743 एंड लेट्स मार्क द 757. तो अभी मैं क्यों प्राइस ऑन टाइम स्क्वायर पे लिए हैं इस ट्रेड को? फर्स्ट ऑफ ऑल द रीजन इज द 10/4/2022 which is the Gann date, which was the Gann date actually. तो इस Gann date पे अगर मैं देखूं तो Gann date पे ट्रेड जो आया था, द ट्रेड वाज कमिंग एट द बियरिश वे. ठीक है, ये बियरिश वे पे ट्रेड था. यू कैन सी, आई कैन जूम हियर. ओके, ये ट्रेड, इसके बाद नेक्स्ट ट्रेड जो आया वो था एनगल्फिंग. उसके बाद जो ट्रेड आया दैट इज द इनसाइड बार फॉर्मेशन. तो एनगल्फिंग पैटर्न क्रिएट हुआ by two next this candles. इवन द पहले कैंडल जो 3/10 का 2022 का जो कैंडल था, 3 और 4 मिलाकर मार्केट में यहाँ पे इनसाइड बार पैटर्न क्रिएट हुए. सो इट क्रिएट अ वेरी स्ट्रॉन्ग सेलिंग सिग्नल. Well, this kind of trade is very strong selling pattern, by the way, if you want to understand why. मैं यहाँ पर एक सिंपल सा लॉजिक आपको दिखा सकता हूँ. दैट इज, यू कैन सी नाउ 27/9 यहाँ पर बने इनसाइड बार एनगल्फिंग, अगेन यहाँ पर एनगल्फिंग इनसाइड बार. ओके, और ये जो शुरुआत हुआ था, ये हुआ था 22/9 से, जहां पर मार्केट ने एक काफी हायर रेंज पर मार्केट ने यहाँ पर इनसाइड बार को क्रिएट किए थे. सो बेसिकली व्हेन द लो गॉट ब्रोकन, इट शुड केम डाउन मोर. बट यहाँ पर क्या हुआ, जो मैंने कहा था कि एकोमोडेशन जोन पर मार्केट ने इसको रोक लिए. सो वॉट एवर द रीजन इज, दैट मीन्स द सपोर्ट इज प्रिटी मच स्ट्रॉन्गर रादर देन एनीथिंग. तो उसी पर मार्केट ने जब ऊपर की तरफ रेंज को ब्रेक किए, इट गॉन ऑन द अपवर्ड साइड एंड ओपन विद द गैप अप मेथड, और इट हिट द डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न्स हाई ऑलमोस्ट. तो हम यहाँ पर अभी कह सकते हैं कि मार्केट ने ये जो डेट था 10/4/2022, मार्केट अभी उस डेट के ऊपर और उस रेंज पर है. तो हमें यहाँ पर अगर ट्रेड मिलते हैं, यू हैव टू थिंक कि अगर हमें यहाँ पर ट्रेड मिलते हैं एट दिस लेवल, तो हम यहाँ पर काफी अच्छी तरीके से मार्केट में एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट वाइज ट्रेड को ले सकते हैं विद द लेस रिस्क. अब बात करते हैं 743 जो लेवल मैंने डिस्कस की थी. मार्केट 743 के जस्ट नीचे आए एंड इट क्लोजेस एट द 749. सो पॉसिबिलिटीज इज देयर कि मार्केट यहाँ से अगर बाउंस करे तो ये कैन गो अप टू 756 वेरी इजीली. ओके, इट कैन गो अप टू 45 डिग्री एंगल ओवर हियर. एंड अगर 45 डिग्री के ऊपर स्टे हो जाते हैं, इट कैन गो अप टू इट्स नेक्स्ट लेवल व्हिच इज द 771 व्हिच इज द 90 डिग्री, राइट. देन फ्रॉम द 771 इट कैन गो अप टू this 135 degree which is at 785 to 799 to 813. नीचे की तरफ कौन से ट्रेड आ सकते हैं, कौन से लेवल आ सकते हैं, वी आर नॉट काउंटिंग इट बिकॉज दिस इज नॉट वर्थ इट फॉर द कैलकुलेशन. सेकेंड थिंग, the next candidate is coming at this level 9th of November 2022, मतलब 9th को आ रहे हैं. आज है 5 तारीख, 5, 6 संडे, 7, 8, 9, that means the upcoming Wednesday. So
if up to upcoming Wednesday market staying above the 743 zone, we can still calculate it as a short term buying. Now coming to the next question, what I asked कि इस तरीके का स्टॉक किस रीजन से पिक किया जाता है. फर्स्ट ऑफ ऑल कभी कभार इस तरीके का स्टॉक्स जो है वो हमें काफ़ी अच्छे तरीके से रिटर्न देते हैं, which can give you a return in the very less period and very good amount of return with the 3-digit return it can give. Suppose you are able to pick this stock at the 490 at where the chart started. आपने यहाँ पर पिक किए थे and you are just following the technical and the square price and time squaring. Suppose तो यहाँ पर क्या होते हैं, आपने यहाँ पर पिक किया स्टॉक को, you exited from the stock over here as this is not a stock which you can get something from the short I mean the selling position. तो आपने just इसको follow up किया, slowly you are able to get this complete move, right? Suppose this complete move was at 103%. So you can easily get this kind of move within very short time. एक साल के अंदर आपको 103 के अंदर अगर आपको 3 बार भी एग्जिट करना पड़ा था यहाँ पर, you can easily get a profit of 60% around. तो ये 60% रिटर्न एक स्टॉक को फॉलो करते हुए मिल गए, which is bit tough in the any kind of large cap stocks, right? Not tough, but it is subjective, definitely. Okay, so I hope I can clear this all of these things over here. Next stock, I am coming to the HDFC Asset Management, which is called the HDFC AMC. Now, HDFC AMC, this is one kind of stock. You can see the stock is beaten by black and blue, even having the HDFC brand tag. कितने परसेंट गिरा ये स्टॉक? From the 3,800 to at this zone of 55%. Again, my first picking method is the 0.5, मतलब 50% ये गिर चुका है स्टॉक. तो अकॉर्डिंग टू दैट, अगर आप इस 50% के जो गिरने की वजह थी, ये पहले इस तक गए थे. From this level it dropped up to 50%. अगर आप देखें तो 50% रूल काफी अच्छे तरीके से अप्लाई होते हैं. And you can now see the market is coming at this zone. Okay. So let's draw the trend line first. यहाँ से लेकर अगर मैं trend line को draw कर दूँ, you can see now currently market break the trend line on the upward side. By breaking the trend line, you can see the market is continuously having 3 breakouts over here. The first, sorry, 3 higher lows over here. First, second, and the third. Okay. Now, let's move to the stock fundamental. Okay, HDFC AMC fundamental. The less return in the last 6 months is the 8%. Even in the 3 years, the stock have been down of about 10%. In the 1 year, the stock is down about 21%. Okay, it might be look big, but one thing you need to make sure that this kind of investment need the different kind of mindset. Each and every kind of investment, you have to be first fix your mindset and then you can invest. The best part of this stock is the pledge percentage is 0. The market capitalization is 44,000 and the PG ratio is the 1.58, which is little bit on the overvalued as of now. Okay, so debt free company hai, so each and every time you can get a good amount of swings, you will get the good amount of return. Now coming to the point, which is the earning per share, which is increased in the September month. So from the 16 to 14 to 17. Okay, the net profit increased, and if you watch in the yearly profit and loss over here, which is come up to 62, 65 and 64 in the TTM. तो यहाँ पर कुछ खास फर्क नहीं पड़ा है, but फिर भी we always need to see the first of all cash flow.
कैश फ्लो जो है यहाँ पर माइनस से ये जीरो हो गए हैं, मतलब इनके पास जो भी नेगेटिव कैश फ्लो था वो दे फिल्ड इट एंड इट इज कमिंग टू द न्यूट्रल जोन. It is not bad, not good, but it is okay. Now coming to the next part, the promoters sold their share. The financial institutions are bought it from the 7 to 12. The our domestic institution has bought it from the 11 to 12. Again, the public shareholding is always the almost the same. Little bit on the less side, 0.01% down. ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू दैट वी पिक दिस स्टॉक एट द करंट वैल्यूएशन. वैल्यूएशन बहुत इंपॉर्टेंट है. ठीक है, तो ये वैल्यूएशन हमारे पास आ गए. नाउ कमिंग टू द पॉइंट, इफ द स्टॉक इज करेंटली फॉर्मिंग दिस पैटर्न, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस पैटर्न? फर्स्ट ऑफ ऑल, you can see now market formed this zone earlier. This is the zone, the biggest zone. The bigger the zone is, the better is. मतलब एक कैंडल के बीच में, इस एक कैंडल के बीच में मार्केट में काफी अच्छे स्मॉलर मूवमेंट को क्रिएट किया था, नीचे की तरफ आए, फिर से ऊपर की तरफ जाने लगे. दिस इज वन ऑफ द इंडिकेशन द स्टॉक इज समहाउ डूइंग गुड अकॉर्डिंग टू इट्स करंट सिनेरियो. ओके, टेक्निकली तो यहाँ पर अगर हम देखें तो मार्केट ऊपर की तरफ जा रहा है ये स्टॉक. Now, if the market stay over here, we need to now open the Gann chart to see the price currently. The current price of the stock is around 2088. Okay, तो 2088 का जो स्टॉक है, you have to calibrate the Gann sheet to work over. I said okay. So this is the price of 2088. So I can take the price of around 1980, which is 225%, 220, sorry, 270 level. So I can 225. I'm assuming 1980. Okay, let's take that. Okay, 1980. Now the next level I can focus, which is the 2160. ओके, तो मैं इस जोन पर फोकस कर रहा हूँ फिलहाल. ओके, नाउ द क्वेश्चन कम दैट करंट सिचुएशन पे हमें क्या फोकस करना है फिलहाल. You can see there is a low which is indicating a doji candle, the accumulation phase. Second, the market created this inside pattern at current zone. Again, this inside pattern at this zone. दो inside pattern यहाँ पर मार्केट ने क्रिएट किए हैं. तो जब तक मार्केट, अगर मार्केट यहाँ से एक बार अपने जोन से निकल गए, मतलब ऑलमोस्ट इट नीड टू ब्रेक आउट अबव द 2098. तो 2098 के ऊपर अगर HDFC AMC के प्राइस गोइंग, तो हमें नेक्स्ट जो टारगेट मिलेगा दैट इज द 2218. सो 2218 इफ आई सी इट कैन ऑल्सो गो अप टू द लेवल ऑफ 2340. Okay, so this is a shorter term target. I am giving it to you for the current stock. This stock is, I think it is very much
not dependable on the Nifty. If I compare the stock, नहीं तो ये बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट नहीं है स्टॉक से, तो निफ्टी से वीक ही है स्टॉक, ठीक है। बट अगर मैं देखूं, दिस इज लो हाई, तो निफ्टी जब जब नीचे की तरफ स्लाइड किए हैं, द स्टॉक इज ऑल्सो स्लाइडेड, बट हियर वन थिंग यू नीड टू सी, देयर इज अ डाइवर्जेंस, मतलब कहीं ना कहीं इस लेवल से जो कि हमने ड्रॉ किए थे, इस लेवल से निफ्टी के साथ स्टॉक का डाइवर्जेंस क्रिएट हुए हैं। मैं शायद आपको समझा नहीं पा रहा हूँ यहाँ पर, वन थिंग, एट दिस लेवल अगर आप देखें ध्यान से कि ये 16 के 16 मई तक की जोन है, जहां पर निफ्टी ने उस लो को तोड़ा था एट अराउंड 21 जुलाई। बट यहाँ पर अगर आप देखें तो प्राइस ने यहाँ पर डाइवर्जेंस करते हुए ऊपर की तरफ भागे हैं, रादर देन सेम यहाँ पर मूवमेंट अभी बाकी है। निफ्टी ने अपने जो हायर रेंज थे उसको क्रॉस कर दिए, बट इट इज नॉट एबल टू कैच दैट मोमेंटम येट। बट मैं क्यों यहाँ पर बोल रहा हूँ कि द स्टॉक कैन गेन मोमेंटम इन द अपकमिंग डेज, इट नॉट डिपेंड ऑन द निफ्टी। सो यू कैन सी दिस जोन, ये वाला जो जोन है, ये शॉर्ट टर्म के लिए निफ्टी का जो टॉप बना था, मतलब निफ्टी ने जब अपने प्रीवियस टॉप को तोड़े थे एट दिस रेंज, at this same range you can see the it is also created another divergence। तो अभी मार्केट उसी डाइवर्जेंस के लेवल से ऊपर है, so it can have potential, either it can outperform nifty or it can go with the nifty in case nifty can go up, if in case we are technical trader, so we don't bother about all of this कि निफ्टी कब ऊपर जाएगा कब नीचे जाएगा, but our stocks can really perform well। सो रिसेंटली जैसे कि मैंने पॉलीकैप का ऑलरेडी एनालिसिस किया है, तो मैं इस वीडियो में और नहीं करूंगा उसका एनालिसिस। बट इफ यू सी इन द लास्ट मुहूर्त ट्रेडिंग, I picked a stock that is the Bajaj Steel, which gives us a return of the 41% around. Or there is another stock which I picked in the live session of the um, my fundamental class, so that I picked the Karnataka Bank, which is already given us a return of the 98% in this area. Okay, so that's it as of now from my end. Even this is the Bajaj Steel. It is one of my favorite stock की ये just अपनी 11 दिनों में, मतलब from the date of October 24 to now to 4th of November 40% रिटर्न ये दे चुके हैं। दिस इज वन ऑफ माई फेवरेट स्टॉक currently। तो this is all about this kind of picking method, okay, nothing else। Okay, so that's it as of now from my end, and I will get back.